Okay, our topic is today. Our topic is length contraction and time dilation. Length contraction means why the length will be shorter, okay, and why the time will be delayed. Okay, for the object moving with the relativistic velocity with respect to speed of light. Okay, then why what will be happen and why this will be happen. Okay, today we will discuss about. Firstly, now what is the length? So we will start from the length contraction. Firstly, first question is what is the length? Length is the distance between 2 points. Okay, that is length observed by any observer. Okay, so if I say this is a single rod, okay, and observer are interested to measure its length, and this rod okay, now we assume that, okay, for example, plane is moving or anything, a rod is moving. Okay, so if observer measures its length, what will be the length of this? Okay, so to measure the length, there will be 2 points. One will be the initial A point, one will be a because A and B we are already using, so we say that this is L naught, okay, initial length, okay, and this is final F. Okay, so there is 2 points. Okay, let's suppose this is naught point, okay, and this is F point. Okay, so there are 2 points, initial point and ending point. इसको फाइनल पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है, ई भी लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे. एफ लिखूं, ई लिखूं, ठीक है, एफ, ठीक है. So this is initial point of the and this is final point. And what will be the length? You know that length is defined as, that will be LF minus L naught. Okay, very clear. But what will be the relativistic length? Now the question, this is the simple formula for the length, measuring the length. Okay. No question is what will be the, actually our topic is about the relativistic length. Okay. Relativistic length. Okay. How we may find the relativistic length. Okay, now if relativistic length means if this mass is moving with the some velocity, okay, 2 observer will be observed this velocity. Okay, 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 now we know that time is different for different frames. Okay, as we know that okay, there are 2 frames. Okay, let observer B is moving along the rod. Observing B जो है वो क्या, observer B जो है, that is as I have already stated that the observer B is the observer that is in a motion. Okay, and that is moving with the velocity What will be the velocity of observer VBA with respect to observer A?
Yes, that's I always stated that B is moving with the velocity VBA with respect to A. That was the definition of VBA. Okay. So the observer B is moving along the rod with the velocity B with respect to observer A. Yes? Okay. Okay. Now since observer B is moving along this rod B, observer B is moving along the rod B. Okay. Since observer B is moving along the rod okay, moving along the rod. Okay, when he observes the initial and final point, okay, there is no condition the time must be a same, because rod is stationary according to observer B. ओके, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, अगर ना समझ आए दोबारा पूछ लेना, ठीक है। ऑब्जर्वर बी इज स्टैंडिंग ऑन दिस, ओके, रॉड के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है। समझो कि हम ऑब्जर्वर बी ही रॉड को कह रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑब्जर्वर बी, बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग द रॉड, सो द वेलोसिटी ऑफ रॉड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी विल बी 0, not constant 0, because he is moving along. If two parties is moving with the same speed, the velocity will be a 0. Yes. So observer B is moving along the rod. The rod is stationary with respect to observer B. Yes. If observer B is stationary, okay, then the time of, so he may measure the initial and final point and any time. They may measure they may find the position of F and initial. That may be a difference. Okay. Okay. So there will be no condition for simultaneously measuring the position of two end points. Simultaneous mean एक टाइम पे, ठीक है। So there will be no condition for simultaneously measuring the position of two end points of rod in 1 minute through observer या for observer B or observer B. Now yes, कौन पूछना चाह रहा है? Yes. So there will be no condition for simultaneously measuring the position of two end point of rod for observer. What is the simultaneously mean? The time
time may be a different. If I represent by initial and final. Okay, so TB for initial, TB for initial, that may be equal. इनिशियल को आप नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, फाइनल को जे से. ओके, ऐसे ही है ना. इनिशियल को आप आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, फाइनल को उससे. ठीक है, तो नहीं वही लगा दिया मैंने वो ऑब्जर्वर के हिसाब से भी लगाना है, मैं वो आपको पता चल जाता है. ठीक है, इनिशियली आपके इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ओ से, और फाइनल को आप एफ से जाहिर कर रहे हो. ठीक है, तो डी बी टाइम, डी बी जो है दैट मे बी अ डिफरेंट. ओके, आप रॉड का इनिशियल टाइम जो है और फाइनल टाइम दैट मे बी अ डिफरेंट. दे मे बी इक्वल एंड दे मे बी अ डिफरेंट, दैट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी. So time may be for B observer, time may be, there is no condition on time. Okay. Okay. So this is the time of the initial point. Okay. Initial point. O mean initial, and this is time observed for the B point. That position measured for of a B point for observer B. Okay. Yes. But for observer A, rod is moving with velocity VBA. For observer A, rod is moving with the velocity VBA because B's frame is fixed on the B. Okay. Okay. Because with passage of time, because that object is moving, you know that the visibility of the observer may be a change. Okay, so if he is interested to measure the length of moving observer, moving object, he must measure the position of both points simultaneously, mean at one time. Okay, mean TB naught, that is observer A, for observer A. That will be a TA naught, okay. TA naught must be same as TAF. Means for observer A, the initial time and final point must be a same. Okay. Okay, got it? So if I say this is formula is R1, yes, this formula was R2. I think I have mentioned the name like that. Okay, now it is clear. For for B observer, time may be a different for because there is a no condition, because he is moving, तो कभी भी measure कर ले तो उससे कोई problem नहीं. But for observer at rest, okay, जो कि उसको moving object को देख रहा है,
उसके लिए जो वेलोसिटी है जो है दैट मस्ट बी मेजर्ड सिमल्टेनियसली। उसे एक वक्त में दोनों पॉइंट्स को देखना है। अगर वो डिफरेंट टाइम पे देखेगा तो वो लेंथ नहीं मेजर कर सकेगा। ठीक, क्लियर हो गया सबको? ओके, तो लेंथ में विल बी मेजर्ड फ्रॉम दी क्या ठीक है इनिशियल। आप ए की बात कर रहे हो या बी की बात कर रहे हो? पहले मतलब ये है कि अगर इसने इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है कुछ देर बाद तो वो गायब भी हो सकता है ना। कब? जब इस रॉड की आपने लेंथ मेजर करनी है तो आपको सिमल्टेनियसली इस पॉइंट की पोजीशन और इनिशियल पॉइंट की पोजीशन दोनों इकट्ठी निकालनी है। दोनों इकट्ठे रहोगे ना, आपने किसी का मेजर करना है तो ऊपर वाली हाइट, और क्योंकि वो वक्त के साथ मूव भी कर रहा है ना, स्टेशनरी नहीं है। अगर स्टेशनरी है, इफ इट इज एट वेस्ट, तो आप पहले साथ ले लो फिर बाद में इनिशियली उसकी पॉइंट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 बजे आपने पाँव के जीरो कंसिडर किया है, 5 फुट 5 इंच का एक बंदा है, ठीक है, आपने 10 मिनट के बाद पोजीशन ली है तो आप मेजर कर सकते हो टाइम लेंथ, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर रही है देन यू हैव टू मेजर सिमल्टेनियसली, क्योंकि उसके बाद तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। फिर एक चीज मूव कर रही है, पहले यहां थी फिर यहां हो गई, तो फिर ए की पोजीशन और हो जाएगी, बी पॉइंट की पोजीशन और हो जाएगी। नहीं समझ आए? समझो, टी पे एक ये इसकी पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन नॉट पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, ऐसे कह रही है। अगर ये मूव कर रहा है, आप दोनों को इकट्ठा मेजर करोगे तो ये पॉइंट इसकी लेंथ निकलेगी ना। अगर ये मूव कर रहा है तो थोड़ी देर बाद तो इसकी पोजीशन और हो जाएगी, इनिशियल की और हो जाएगी फाइनल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, आपने, मैं एक दोबारा सारे समझने की कोशिश करूं। अगर ये बॉडी मूव कर रही है, आपने ये टी ये नॉट ले ली है, ठीक है, आप मूव करके ये यहां आ गई है, समझ रहे हो आप? नाउ इट्स पोजीशन इज, अब आप टी एफ निकालते हो, ये आप टी ए एफ ले लेते हो, एंड इफ दे आर डिफरेंट, ये टाइम डिफरेंट है, आपने डिफरेंट टाइम पे ये यहां पहुंच गया, तो इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? अब एफ पॉइंट ये आ गया, अब लेंथ जो है वो क्या होगी, उससे डिफरेंट हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंथ तो नहीं होगी ना, ये तो उससे लेंथ से काफी बड़ी हो गई ना। आपने इनिशियल ये निकाला, फाइनल ये निकाला, इनिशियल की पोजीशन ये निकाली और फाइनल की ये निकाली, और मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप एट रेस्ट पे हो, तो फिर तो वैल्यू वेलोसिटी डिफरेंट निकल आएगी ना। आपको क्या होना, अगर जिस वक्त में आपने इनिशियल निकाली है उसी वक्त में आपको फाइनल निकाली होगी, तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये आप मूव कर, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ओके, एंड यू डिले द टाइम, देन लेंथ विल बी लार्जर देन। गॉट इट? एवरीवन गॉट? ठीक है। बट इफ द thing is stationary, then it will not affect. ठीक है। But if the object is moving with respect to any observer, okay, for observer A, okay, then if you measure the time position of initial position at different time and final position at different time, then the length of this rod will be a different. So to measure the exact value, this is not, this is final. So measuring the time A F, that must be as the same. Okay, but for here this was the case for, आपने ये तमाम पिक्चर्स बनानी है, ठीक है। For T A naught is equal to T A F, result will be wrong. Okay, length will be wrong. Have you got it? Yes. But if they measure simultaneously, result will be accurate. Okay, got it?
So that's why for a moving object, that's why for moving object, if observer is rest, the time must be the initial and final point must be measured simultaneously. Okay, CR. Okay, so okay. One result is this, one result is this. Okay? Okay. I think here was a DA, not TB. Okay? So, RB will be, so observer B measure, okay, this is observer B, this is measuring position, this is RB naught, okay, this is RBF, okay, this was the final position, okay. RB naught will be equal to RA naught, okay, because initial position, RA naught minus velocity is constant, VBA TA naught, yes, and 1 divided by VBA over C square. This is initial position of rod with respect to time. Okay. This will be RBF, means final position with respect to B. Okay, the position of the final point. Okay, and that will be RBF minus VBA TAF. Okay, and 1 minus VBA over C square. Okay, as I have already told and explained, length observed by B, okay, length observed from B, that will be equal to length observed by B, that will be equal to RBF minus RB initial. Okay, the final position and initial position. Okay, so result will be but TA naught is equal to TAF as already explained. Yes, we have used that the time will be simultaneously. Okay, the time for B is different, but for A is same. So when we subtract, these are the same. This will be a common factor. Okay, means you may say that this will be R 1 over 1 minus VBA C. We take common from both sides, RBF. When we subtract, this will be cancelled. These are the same. These are the same. This term will be cancelled. So RBF minus
sorry. That was AF, sorry, that was A. Or AF or A naught. Okay. The LB will be, what is this? L, yes. This is length. Yes. This is the length observed from the observer A. This is length from the, this is LA, length observed by observer A. Yes. So that become LA over 1 minus VDA over C square. Okay. Got it? Okay. Okay. This is our required result. Okay. Acha, now LB length measured by observer B moving along the rod is that rod is at in rest for observer B. So this is the length, rest length. Okay. So this is the L at rest. Okay. Because observer is moving along this, and this for this the length of the rod when rod is at rest. Okay, क्योंकि उसके लिहाज से वो rest पे है, ठीक है? So this is the length. This LB is the length as the length for the when the rod at rest. Okay. Okay. Got it? And LA is length observed by observer A for which rod is moving with velocity VB. So this is motion. Means if rod is moving, then what will be the velocity? Okay. So if I say that so this is rest, this is motion. Okay, L motion. Okay. So it means L rest is equal to L motion, meaning if rod is moving. This is length measure for the observer for which rod is moving. This is length for which rod is at stationary. Okay, means some maybe means it is the length measured by the rod itself. You may also say that. Okay. Okay. So rest
B is rest, LA is motion, and that is the factor 1 minus VBA over C square. Okay, and that VB constant. Okay, so that will be 1 minus VBA over C square L rest. Okay. Okay. C is larger than, because we will consider that we have considered that the speed of light is the largest measured velocity, measured speed. Nothing can move. We are considering here that we are not considering the objects which are moving faster than the speed of light. Okay, so this C is larger than, so this factor will be less than 1. Okay, this factor will be less than, and when this factor will be subtracted from this will become a less than 1. Yes, since VBA must be less than C, for this formula there is condition, the velocity must be, that's why we have subtracted the VBA, this velocity of moving object must be less than speed of light. This implies that VBA over C, because C will be larger, C square, it will be less than 1, and नहीं, सी हम हमेशा बड़ा ही लेंगे. स्पीड हमने इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को हमने लार्जेस्ट स्पीड कंसिडर किया. ठीक है. ओके, एंड आगे वो हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आपको बाद में, इसीलिए वो कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई वी, ओके, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होगा तो, यानी उसकी वैल्यू इतनी बड़ी है बाकी वेलोसिटीज की निस्बत कि उसमें से वेलोसिटीज को दूसरों को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो 1 माइनस VBA over C square will be less than 1, and when we multiply a small this will be less than this. If this is a 1 and something is subtracted from this, okay, then that will become a 1, and there is a square, and that will be always in 1 minute. This is greater than 1, sorry, and this will be always positive number. Okay, ये नंबर पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, ऊपर पावर स्क्वायर है ना, तो ये 0 से बड़ा होगा. तो इस वजह से जब ये क्वांटिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर रूट भी लेस देन 1 हो जाएगा. ठीक है. When this is less than 1, when we multiply, so this quantity is less than 1. When we multiply the quantity which is less than 1 with any number, whether they are larger or smaller than 1, even smaller than 1, then the result will be this more small. Okay. For example, if you multiply 0.2 with the 1, the result will be smaller. 0.2 multiplied with the 5, then result will be smaller than the 5. Okay. So when we multiply a smaller factor with any number, then the resultant will be a small. Okay. So if this is small, हाँ जी, मल्टीप्लाई करने से जो है वो स्मॉल होगा और डिवाइड करने से लार्जर हो जाएगा. ठीक है. अगर कोई क्वांटिटी 1 से कम है तो उसको मल्टीप्लाई करते हो तो चीज स्मॉल हो जाएगी, और अगर डिवाइड करते हो तो लार्ज हो जाएगी. ठीक है. नहीं, डिवाइड करते हैं तो लार्ज हो जाएगी. स्मॉल नंबर को जब डिवाइड करते हैं, 1 से स्मॉल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी मजीद बड़ी हो जाएगी. ठीक है. इट विल बिकम अ लार्ज. आफ्टर डिवीजन इट विल बिकम अ लार्ज. By dividing with the small numbers, the quantity become large. When we multiply small number with any number, then resultant will be a large. Small number increase the value,
with division and decrease the value when multiply. Okay, opposite way. Okay, so what will be the result? So L motion will be less than L rest because this factor is less. Okay, so if rod is at stationary, then its length will be large. When it start to moving larger velocity, then its length become small. So the length of moving object will be smaller than the length measured by the stationary. Okay, ठीक है, समझ आ गई? नहीं समझ आई? ये जो रेस्ट है, मतलब if this is rod, if you measure the length, this will be larger, but if that's moving with the speed of light, then we will observe its length is smaller than the actual length. Got it? That is defined because length is contracting, means length is contracting. That's why that is defined as length contraction. Okay. Okay. Now next topic is about the time dilation. Yes. Now we will time dilation. What is the time dilation? Okay. Yes. Now please. अच्छा, हाँ जी. Time dilation क्या है? What is the time interval? What will be the time interval? Okay. If time interval is the interval, time interval is actually the time, total time slash between two intervals. For example, if you have a spring mass system, okay, you stretch it, okay, and if it moves toward the maximum position, that is x naught, if that position is x naught, and after completing time, it comes into the, firstly it start motion from the rest, and that comes as extreme position, and then come again the mean position. We can measure the, what will be time class between for this point from initial to mean position to final and final to या to explore आपने एक मतलब एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो एक जब तक एक्सप्लोजन शुरू होता है उससे लेके जब एक्सप्लोजन हो जाता है उसके दरमियान जो टाइम खर्च हुआ है दैट विल बी डिफाइन एज अ टाइम. ठीक है, एक ही पोजीशन पे टाइम, एक ही वक्त पे, एक पोजीशन पे, वक्त पे नहीं, टाइम तो दो लगेंगे. ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ बम धमाका हुआ, मतलब हुआ, बम फटा है, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, तो एक्सप्लोजन होने से पहले और एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद एक ही प्लेस है, ठीक है, तो टाइम डिफरेंट होगा. ठीक है, उस टाइम का डिफरेंस जो है वो आपको बताएगा जो है कितना टाइम क्लैप्स हुआ. ठीक है, okay. For mass moving with this, जिसके लिए ये रेस्ट है, for observer B moving would be for which he to for observer B for which event place is, as I have stated in the last time. ठीक है, for observer B for which event place is stationary. Event place
for observer B even place because it is moving with that. So for observer B, for which even place is stationary. Okay. If the even place is stationary, then there will be no change in a position. So there will be no change in even place for observer B. Okay. Now the place for TB will be stationary. Okay. For that, in the previous time, for the A was a stationary. So for this we have to find in this for the length contraction we was interested to find the RB because we have to put TA is the same. But here we will find the TA, and we have explained in the previous that if TB is equal to TA minus VBA over C, okay, over 1 VBA over C square, if this is the relationship, okay, then TA will be, because both are moving in opposite direction, because VBA is equal to minus AB, direction is opposite, okay, that was C square or C, okay, so that is the opposite, so TA will be TB minus VBA over C over 1 minus VBA over C square. Okay. Sorry. Because now A is become B and B we have replaced. हमने ऐसे किया, we have replaced with the B with A, okay? जहाँ B था वहाँ हमने B को A से और A को B से, यानी B को अगर मैं A से replace करता हूँ, ठीक है? For B replacing with the A and A replacing with the B, okay? Because according to A, B is moving, ऐसे ही. So we may replace the indices. मैंने B को replace कर दिया A से और A को replace कर दिया B से, तो यहाँ क्या आएगा? TA AB ओवर, मैं बता देता हूँ, हमने TA की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, TA वही उसी तरह एक्सप्रेशन शो कर रहा है जैसे B शो कर रहा है, लेकिन TA जो है वो एक्ट वेस्ट पे है और B जो है वो इवन के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया? नहीं, मैं जिसका सेम होता है, जिस पे चेंज नहीं आ रहा था, उसको वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे की निकालते हैं, जैसे पहले किया था हमने, ठीक है? अच्छा, अब ये आ गया आपका TA का, क्योंकि TA वो टाइम है, मैं आपको एग्जांपल आपको समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मेरा ख्याल है मुझे समझाने में कोई अच्छी एग्जांपल नहीं आई थी, अब मैं बताता हूँ. मिसाल के तौर पे ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये जहाज जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जहाज आ रहा है, जहाज फट गया, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है. अच्छा, यहां इसमें जो बैठा होगा उसके मुताबिक ये स्टेशनरी है ना, जहाज के साथ मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जहाज की चेंज नहीं हो रही ना, उसके मुताबिक इवेंट इसी पोजीशन पे हो रहा है. लेकिन जो अर्थ के हिसाब से जो देख रहा है वो यहाँ था,
जो एक्सप्लोजन यहाँ हुआ है, थोड़ी देर बाद वो एक्सप्लोजन कहाँ पहुंच गया? अब नहीं, वो मूव कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ आई? यहां बैठे हुए जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी देर बाद हमें यहां एक्टिविटी नजर आएगी, वही एक्टिविटी थोड़ी देर बाद आगे नजर आएगी। यहां एक्सप्लोजन हुआ है ना, तो आपको पता है कि ये जहाज के ऊपर ही एक्सप्लोजन, आप जहाज पे हैं तो आपको नजर लगेगा मतलब कि ये जहाज में ही हुआ है, वहीं हुआ है। लेकिन अगर जमीन पे जो देख रहे हैं वो पहले यहां देखेगा चलते हुए जहाज को, फिर यहां देखेगा, फिर आगे, यानी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसिडर दी वो पर्सन जो कि वो जहाज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। सो आपके पास टी ये आ गया, बट टी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, हम तो ये यूज करते हैं, टी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो टी ए हमारे पास आ जाएगा टी बी प्लस वी बी ओवर सी। अच्छा, हम इसके उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, 1 माइनस, नहीं स्केयर है ना, कांस्टेंट नहीं, स्केयर है ना, -1 का स्केयर +1 ही होता है, ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू नीचे है। यही आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो टाइम है जैसे उस तरह दिए थे, टी ए इनिशियल रिप्रेजेंटिंग बाई नॉट, ये मैंने माइनस किया, इसकी वैल्यू पुट की तो ये प्लस, ठीक है। ये थी ना, ए को बी से रिप्लेस किया, पहले ए को बी को ए से रिप्लेस किया और माइनस किया, तो ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू हम क्योंकि ये वी बी ए यूज कर रहे हैं, ये वेलोसिटी डाली और ये वैल्यू, नहीं वो माइनस है ना, प्लस आएगा ना, हमारे पास वेलोसिटी मैयर बी मूव कर रहा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी आर नॉट मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, so that's why VB over C. A is at stationary and B is moving along the event. That's why we will measure the velocity of B with respect to A. ठीक है? Okay. B is moving with the velocity of the event plane. He is sitting on the event. Okay. So velocity of VBA will be the velocity of B with respect to Earth in A, ठीक है। So that's why we have to replace, because हम हर जगह ये यूज कर रहे हैं, so that's why when we put this value, this become a plus and this will become a okay, then what will be the initial B0 plus VBA over C 1 minus VBA over C square, okay, और टी फाइनल क्या आ जाएगा? ओके, तो डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा? द टाइम ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जर्वर ए, ठीक है, इंटरवल, ठीक है, दैट विल बी टी ए एफ माइनस टी ए नॉट, ओके, एंड the same, that will be a 0 and 1 over 1 V minus VBA over C square TBF minus TA naught. So this will be a delta TA. Okay. B naught.
Okay. And what is this? This delta TA. Delta TB. 1 minus B A over C square. And this will be a delta TB. Okay. This TA for which this is moving. So this is time for just delta TA is time collapse. It is the frame at rest, but it is the time collapse for which event is moving. So this is time collapse for event is moving with velocity Vb. Okay. Yes. And this will be defined as time motion. So that's why that will be time for moving object. Okay. This is what is the TB? This is time collapse for event is at rest, because it is moving with event. So it's because it is moving with the event. So for this observer B, the event will be at rest. Because this is the man standing in the or sitting in the plane. Okay, where explosion happened, unfortunately. Okay. Why I have written it as a motion? Yes, that's according to A object, the plane is moving, and event is happened at the in the plane. So event is moving. This is the time measured when event is moving. Okay, because the plane is moving with respect to frame A of A. Frame A itself is at rest, but plane is moving with respect to observer A. But according to B, B is sitting in the plane. So it means the observer is at rest. Yes. Event is at rest according to observer B. Okay. Actually, stationary is nothing. Stationary is the relation between two objects. We can't say you are stationary. Why you are saying the stationary? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप stationary. According to the frame fixed on you because you are moving along the earth. Okay. Actually, you are moving. Okay, but according to Earth, you are at a stationary. But according to Moon, you are moving because you are standing on the Earth. Similarly, as when you are sitting in the plane, okay, you are at rest according to all passengers sitting in the plane because you are not changing the position because you are sitting. But according to observer outside the plane, that is sitting on the earth, the plane is moving. Okay, so actually stationary is nothing or motion is nothing. Actually these are the, according to Einstein, it is the our calculations. Actually the observations tell something is a moving or not moving. Okay, so for A observer, event is moving. Okay, for E observer,
he is sitting on the because he is sitting in the plane. As explosion, unfortunate explosion happened in the plane. He observed that the event is occurred in before him. That is not changing the position. That is something is happening in front of him. Okay, so that's why that will be this time will be defined as the delta t rest. Means he is event is happening in the rest. Mean before him. Okay. Okay. For example, if you slap your friend, then it's this event is in the front of him, and at time you are not standing, that you are not moving. But according to the observer who is watching you on a moving train, according to him, the position of the event is changing. इवन गाड़ी पे भी आप बैठे हो तो गाड़ी के मुताबिक अगर आप गाड़ी से देख रहे हो रास्ते में किसी ने थप्पड़ मारा है या बम चलाया, बम फाड़ा है, तो वो क्या होगा, वो उसे लगेगा कि वो पीछे जा रहा है. आपने देखा होगा जो इवन स्टेशनरी चीजें भी आपको लगती है मूव कर रही हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन विल बी ऑब्जर्व दैट द इवेंट इज इन मोशन, बट the man standing on the station will observe that event is happening in the front of him. That is the stationary pole. The place of the event is stationary. Okay, got it? समझ आ गई? Okay. So this rest, this motion. Okay. 1 minute. Okay. Okay. So when we so delta t motion, so t motion will be equal to t rest over 1 over v over vba over c square. Okay, yes, and this is, since this sum is no, since 1 over 1 vba over c square is less than 1, I have already stated, if we divide something with the smaller number, then it will be increased, its value will be increased. So it means this implies that delta t motion will be larger than delta t at rest. Okay, so it means the time collapse means if you are moving, if you are observing that event is moving, then you will observe this observe of the event will be the time of the event will be a larger than if some is observing for which the event is at stationary. Okay, that both will be have a different clock, time clock. समझ आ गए? It means if you move with the faster light, move with faster speed and that will be relativistic speed as the speed of light, means something comparable with the speed of light, then you will be your age will be stopped, और आप फिर कभी आप देर से बूढ़े होगे, टाइम स्टॉप होगा तो आप देर से बूढ़े होगे. बट इफ अगर आप स्लो चलोगे तो आप जल्दी बूढ़े होगे. सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मतलब टाइम विल बी स्टॉप. इफ यू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट देन द टाइम विल बी स्टॉप एंड आपकी एज जहाँ है वहाँ रुक, इवेंट विल बी स्टॉप. ओके सर, दैट्स द एक्चुअली डिफरेंट. सो दैट विल बी मोशन. अगर इवेंट मूव कर रहा है तो उसको लगेगा कि इवेंट का टाइम बहुत ज्यादा था. मिसाल के तौर पे आपको लगा कि एक एक्सप्लोजन जो है वो 2 मिनट का था, तो अगर एक एक्सप्लोजन 2 मिनट का था, लेकिन अगर एक उसको इन मोशन में देखता उस इवेंट को, यानी इवेंट उसके लिए मूव कर रहा है, तो वो उसे लगेगा कि वो इवेंट 5 मिनट में हुआ है, या मतलब 2 से ज्यादा टाइम लग लिया है. ठीक है, उसने वो इवेंट का टाइम बढ़ जाएगा.
क्लियर हो गया? So that's the next is the mass correction. Okay.